Hello. Hello. So I'm nice Hi, to Shukla. see Lisa. you. Good to see all of you. Likewise. Nice to see you too. Yeah, first of all, the pandemic, and secondly, our varied professions have taken us to places where we hardly meet anymore. So, welcome both of you. Thank you. I'm very happy, and I was thanking Darpan this morning for giving me such fun sessions because I think a lot of our conversations tend to dwell on the past, and this time, we're looking to the future, and I love to talk about the future because I think that I find that very exciting. But of course, our past is what's brought us here. So I'm very happy to share with all our viewers that Noopurr and you and I go back a very long way. We almost started our careers at the same time. I was of course voicing already since I was a child, but in terms of our localization careers, you That's and I graduated around the same time. I started working with my mom. You started working with your dad, that's true. Shukla ji, who was a very well-known actor and voice actor at the time. And you started off writing with him, then directing for him, then I'm sure you've done lots of voicing also, and Yes. project management and all of that. So, welcome, Nupur. Tell me a little bit about your journey since then. Thank you. Thank you, Mona. Like you said, I think we go back about 3 decades. Because we started early, I'm not We're gonna go into dinosaurs. these. We are the dinosaurs of the industry. I'd choose to call ourselves old wine, which is even better. But yeah, and I'd like to speak a little bit in Hindi as well because, as Oh you yes, know, please a do. lot of I'm our always viewers. faulted for that. So yes, तो और तुम नहीं बस बोलोगी तो कौन बोलेगा जिसकी हिंदी मतलब एकदम फैंटास्टिक है. शुक्रिया शुक्रिया रियली बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर रहा है ये लोकलाइजेशन से शुरू हुआ और घूम फिर करके फिर लोकलाइजेशन तक पहुंच गया इस दौरान मतलब टर्नर के साथ एसोसिएट हुई फिर रिलायंस में थी क्योंकि बिग टीवी के लिए बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स जिसको कहते हैं वो किया and I was also a vendor. I mean, I was managing my father's company for quite a while. और उसके बाद फिर से डिज्नी और अब नेटफ्लिक्स क्योंकि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक बूम आया हुआ है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का मगर इस दौरान जितने भी एक्सपीरियंसेस बटोरे चाहे वो प्रोडक्शन साइड से हो ऑप्टिमिस्टिक्स के साथ जब जुड़ी हुई थी या रिलायंस में जब जुड़ी थी टर्नर ऑफ कोर्स और डिज्नी जितने भी एक्सपीरियंस थे एक चीज बिल्कुल साफ हो गई इससे कि लोकलाइजेशन इंडस्ट्री जो है हमारी वो मतलब इट्स बिन ऑन अ राइज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और उसको उसका ड्यू अब मिलना ही चाहिए जिस तरह से बाहर के देशों में जो द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट दिस इंडस्ट्री कमांड्स वो इंडिया में उस रिस्पेक्ट को लेकर आना बहुत जरूरी है Yes, yes, बट या दैट्स बीन माय absolutely. जर्नी या Absolutely. And I know we can count on you for that because तुम दोनों तरफ रही हो. So तुम जानती हो कि localization companies कैसे चलती है, उनकी challenges क्या हैं, and at the same time clients उनकी requirements क्या हैं, उनकी challenges क्या हैं. So you're in a very good position in that sense. And आज याद रखना पूरी इस कॉन्वर्सेशन में कि तुम दो बंगालियों के साथ बात कर रही हो. तुम्हारी हिंदी तो माशाल्लाह है, you know that. Feel free to correct us whenever you like. I was तो going to say कि correct नहीं करूंगी, but it's okay if you want me to. नहीं करेक्ट करती जाओ. ये तो लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं होना चाहिए लाइफ में, चाहे 3 डेकेड हो बिल्कुल, चाहे 10 डेकेड हो. बिल्कुल. So that brings me to my fellow bong, Abhishek Datta. Now, strangely, I don't know if you know Nupur, but Abhishek started his career in localization. Am I right, Abhishek, with Yeah, Sound and Vision India? that's And right. I don't think he joined us with any particular goal to be in the localization industry. He just, it was just one of the things he wanted to try his hand at and learn about. But I always noticed that he was a very keen learner.
So while we always tend to look for creative talent, हम हमेशा राइटर्स ढूंढते हैं, वॉइस एक्टर्स ढूंढते हैं, डबिंग डायरेक्टर्स ढूंढते हैं, या कभी टेक्नीशियंस ढूंढते हैं, तो मुझे हमेशा लगा somehow कि अभिषेक ये सब कुछ तो सीख चुका है, लेकिन his strength lies in management. एंड ये मुझे तब से लगा था जब, पता नहीं, 10-20 साल, हम वी आर 3 decades old, ही इज प्रॉब्ली 2 decades old. Yeah, just a तो little over two. तो मुझे हमेशा लगा कि इसमें इसमें ये काबिलियत है कि ये कुछ और भी कर सकता है, नॉट जस्ट द क्रिएटिव और द टेक्निकल और द टैलेंट साइड ऑफ इट, बट ये और भी मैनेजमेंट का काम कर सकता है, और हमने धीरे धीरे उसको ऑपरेशंस में लाना शुरू किया था. तो अभिषेक, तब से अब तक तुम कहाँ पहुंच गए हो? आई एम सो प्राउड टू सी. माय गॉड, इट्स अ Absolutely. Thank you so fantastic much. journey, fantastic journey from someone who knew nothing about localization, nothing about the media industry, to have grown from absolutely scratch to where you are today. It's very heartening for all of us to see, and it's very inspirational for everybody who is watching today. So tell us about your journey. Well, thank you so much for the warm welcome. Uh, I frankly, the life has basically come full circle. I Yeah. started my career with sound and vision. Uh, Mm. I've been a voiceover artist. I've been a writer. I've been a sound recordist. Uh, I did everything that could be done at a studio. And frankly, Noopurr has been the first person that I ever interacted from at a channel. And today I'm sharing the stage with both of them. It has been a great journey. I got a very good exposure and base created while I was at Sound and Vision. From there, I moved on to Discovery. I moved into programming. I also ahead and started learning editing and stuff. I started working on FCP Pro as well. From Discovery, I got into programming. Various aspects of programming, basically strategizing things on what should launch, when it should launch, what the audience likes, what they don't like. I started getting into data and stuff, started reading. uh, in fact, at that time, data had just started being introduced in the industry. From there, I moved to Viacom networks. Earlier, it was known as MTV Networks. I spent a very, very long time over there. Uh, Basically, over there, we built that entire kids network brick by brick. We launched multiple channels while I was there. I've been part of all those launches, closing all the loops possible. I Specifically, Nick. Nick, Sonic, Nick Jr., Nick HD Plus. So we launched Wow. all these channels while we were there. Uh, we also introduced a lot of language feeds over there as well. And from there, I came into Warner Media. It's been just over two plus years at Warner Media, and it's been a great journey. Frankly, I have always focused on that every 6 months I need to learn something new, which I did not know 6 months ago. And that's how I have kept Yeah. on increasing my learning over the years. And let me tell you something very interesting about Turner and Pogo. So, first of all, that this was the first channel which I had an interaction with, where Nupur used to be a part of Turner. And I always had a dream that, oh gosh, कितना अच्छा होता अगर टर्नर में एक जॉब मिल जाता फ्यूचर में. So it took a long time, but I've come there now. And frankly, uh, Cartoon Network in India has been the first kids network to actually start localizing in India. And apart from that, Pogo was the first local channel in India. Okay, Pogo was launched keeping in mind localization at multiple levels, not just like dubbing or adaptation, but also from the shows of what was put on the channel, the crew that was working on those shows. Everything was truly local in that sense. And even today, I feel very proud to tell you that Pogo is now 100% local channel. With every show on that channel is local, created locally by local crew, by local animation studios, with local artists working for them. And it's being doing very well. In fact, Chota Bheem was the first IP
first local IP that was a hit in India, Yeah, and that was Huge. also Pogo. Yeah, yeah. yeah. And today, if you see, there are multiple properties on the channel. So you have Chota Bheem already existing, but now you have a T2 Har Jawab Ka Sawal Hu. You have a Smashing Simba on the channel. You have a Lambuji Tinguji on the channel. So in terms of width also, you have a lot of shows in that sense. So that's how my journey has been till now. And Wow. frankly, I'll tell you, I frankly feel that I'm just at the right at the start of my career, because I'm still very young and there's still a हमको याद lot मत दिलाओ प्लीज, हमको याद मत दिलाओ। ये बार बार बोलना जरूरी है। एक ही बार। हाँ, so fantastic। तो while life has come full circle from you, तुमने पहले डिस्कवरी ज्वाइन किया, डिस्कवरी ने पीछा नहीं छोड़ा, अभी वापस आ गया है तुम्हारे फोल्ड में। हाँ, so all now together, right after the merger Yeah, so that is something that is still going on। under हाँ, regulatory approvals and stuff. So okay, we're looking forward to it. Spare भी yeah। थोड़ा time है. Huh. And Noopurr also went through a similar thing with Disney and Fox merging, and so a lot of big companies, I think, coming together to pool in their resources and to make sure that they can get a bigger piece of the pie, I Right. guess. And talking about a bigger piece of the pie for both of you, how do you find this? Did you ever see this coming? This kind of crazy growth? Abhishek, Uh, you want to? So, see, when you talk about personal growth, frankly, I have never thought of I was, uh, where I wanted to reach. All I always thought about was that whatever is there in my hand, I should completely focus on it and do the best I could do with that. And that has always been my focus. Like I've worked on more than 20 shows today in India, worked on more than around approximately 2000 hours of local productions of content that I have been associated with over the years, multiple languages that we have done across platforms. Even uh, for Pogo, very recently we launched the Telugu feed. We didn't have a Telugu feed on Pogo. It's just Acha. 3 weeks we have launched the Telugu feed for Pogo in India, and frankly we are planning to add even more. So Is that with uh, original Telugu content or localized Telugu content? So it's localized content dubbed in Telugu. So Correct. content was made in Hindi, which has Yes. been dubbed in Telugu languages. So Yes. just for the people listening to know, currently Pogo is airing in Hindi, Tamil, and Telugu, while CN airs also in Hindi, Tamil, and Telugu. We didn't have the Telugu feed on Pogo earlier, and frankly, we do have plans to even expand those languages going forward as well, because a language does help contribute a lot to the popularity of any particular channel. Like every time you see a new language coming in onto any channels, in whichever market they are targeting, that market grows by at least a couple of times to previously what it was. So it definitely helps to get more and more languages, because then you can reach to a wider audience in a language that resonates with them, that they can relate to, and they can understand, because it's kids, they are growing up. So as they grow up, their mother tongue would be the first one that they would prefer, or the language that they are surrounded with will be the first one that they would prefer. So it definitely helps with that as well. So, what is the maximum number of languages, Nupur, that you have seen something dubbed in? About 7. Seven, right? Dubbed in Yes. seven And or currently, made in one and dubbed in six? well, made in one, dubbed in 7. But if I were to talk about, अगर अभी की बात करें, तो तकरीबन 33-35 भाषाएं हैं इन टोटल। India के लोकलाइजेशन अंदर? नहीं, इंडिया में नहीं। अगर नहीं, आप कंटेंट लोकलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबली, हाँ, तो globally। कंटेंट जो इंडिया में बन रहा है, इंडियन कंटेंट, उसको डब तो नहीं, बट उसको लोकलाइज करते हैं, एज इन सबटाइटलिंग हो, मेन टाइटल लोकलाइजेशन हो, वो Hmm. सारा फॉर द रेस्ट ऑफ द ग्लोब
इतनी हम्म, सारी भाषाओं में उसको किया जाता है बिकॉज करेक्ट। एक तो हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वी आर जस्ट नोन फॉर दैट पोटेटोज एंड इंडियंस, बट तो वहाँ उस कंटेंट का कंजम्पशन होता है। उसके अलावा देर आर अ लॉट ऑफ एक्सपैट्स ऑल्सो हु हम्म, वॉच द कंटेंट। अगर अगर अपनी बात करूं तो जिस भाषा में कंटेंट बना है मैं उस भाषा में उसको देखना पसंद भी करती हूँ, और डब भाषा में भी देखना पसंद करती हूँ। लेकिन अगर ओरिजिनल भाषा में देख रही हूँ तो वहाँ सबटाइटल्स बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि आप आपको फिर एक तो ओरिजिनल लैंग्वेज का फ्लेयर भी मिल जाता है, और हम्म। आपकी समझ में भी आ जाता है कि क्या बोला जा रहा है। और उसके बाद जब आप उसको अपनी भाषा में, डब भाषा में आप उसको देखें तो वो एक्चुअली, तो बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल एज होता ये है दैट आई एंड अप कंज्यूमिंग वन पीस ऑफ कंटेंट ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस, once in its आई नो, original बट form and once. आई आई फाइंड दैट बिकॉज ऑफ आवर लाइव्स, हम जो सारा दिन काम करते हैं, तो हमारे पास मौका बहुत कम मिलता है कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, अपनी मतलब जस्ट फॉर फन देखने वाला जो कंटेंट है हमारा, नॉट द वंस वी आर वर्किंग ऑन, वो तो दिन भर हम देखते ही हैं, बट जो हमको बाय द वे देखना होता है, जिसपे हम काम नहीं कर रहे हैं, जिससे हम एसोसिएटेड ना हो, उसको हम ज्यादातर रात को देखते हैं। एंड एज अ पर्सनल प्रेफरेंस, बाय देन वन इज सो टायर्ड दैट मुझ में पढ़ने की शक्ति है नहीं उसके बाद, हर लाइन बैठ के पढ़ो। हालांकि आई थिंक एज अ कल्चर वी गॉटन वेरी यूज टू कीपिंग द सबटाइटल्स ऑन व्हाइल वी आर वॉचिंग एनीथिंग, वो अब एक आदत हो गई है, बिकॉज द सबs आर ऑलवेज देयर एंड दे आर ऑलवेज अवेलेबल। लेकिन आई थिंक just from a matter of convenience, like if I'm watching a money heist, or if I'm watching any of the Korean shows or the Spanish shows or the Japanese anime, एक आदत सी हो गई है कि मैं इंग्लिश चला के देखूं या हिंदी चला के देखूं, जो भी लैंग्वेज अवेलेबल है फर्स्ट इमीडिएटली, मैं उसमें देखूं जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ इट, सो दैट आई एम नॉट रियली मिसिंग एनीथिंग, कि एक लाइन अगर मैंने पढ़ा नहीं तो कुछ मिस हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। अगेन मतलब बहुत ज़्यादा ये पर्सनल प्रेफ़रेंस की बात है, जी, एंड हाँ। ऑनेस्टली होना, हम इस इंडस्ट्री को बिलॉन्ग करते हैं। मुझे नहीं लगता लास्ट टाइम मैंने कब जिसको कहते हैं अनअडल्टरेटेड वे में कंटेंट को जस्ट फॉर फन एन्जॉय किया होगा, बिकॉज़ ऑटोमैटिकली वो दिमाग चलने लगता है, अरे इसको ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते थे, या यहाँ कुछ और भी लिखा जा सकता था। You can't help it because it's been since the time at least that I have been associated with this field, वेदर आई एम वॉचिंग समथिंग, या थिएटर में देख रही हूँ, या घर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रही हूँ, या चैनल पर देख रही हूँ, वो एक टिकर चलता ही रहता है दिमाग में, अच्छा ये, अच्छा ये। तो एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना मुक्त होके कंटेंट एंजॉय करना मैं भूल चुकी हूँ, बहुत बट मुश्किल, हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल है, या फॉर या श्योर। लेकिन हमारे देश में जो थोड़ा सा लिटरेसी का जो इशू है, उसको राइट। उसकी वजह से आई थिंक शायद डब कंटेंट फिलहाल सबसे ज्यादा कंज्यूम होता होगा। Actually, statistics are a bit strange because even if I speak about local statistics, I don't really have the numbers, so I'm not coming from a place of authority on that. मगर subs को भी उतनी ही मान्यता, if not more, definitely मिल रही है। डब हम्म, कंटेंट yes absolutely कंज्यूम होता है। जब मैं डिज्नी में थी तो उस वक्त भी ये देखा, हमारे थिएट्रिकल रिलीजेस पर जो हमने काम किया था, तो अक्सर हमारे साउथ इंडियन मार्केट्स हिंदी मार्केट से बेटर परफॉर्म कर गए, फॉर सम ऑफ आवर रिलीजेस। तो दैट्स मतलब आप चाहे जो मार्केट अच्छी तरह से परफॉर्म करे, फॉर द इंडस्ट्री ये बहुत अच्छी बात है। आप अगर हम्म, अच्छे टैलेंट को लाते हैं, आप डबिंग फ्रेटर्निटी के लोगों को लेकर के आप कंटेंट डब करते हैं, तो अभी अगर आप देखिए तो ज़्यादातर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार देख लीजिए, या आप नेटफ्लिक्स देख लीजिए, या बाकी के Z5 हैं, बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हमारे जो आर्टिस्ट्स हैं, आप डबिंग डायरेक्टर्स बोल लीजिए, वॉइस आर्टिस्ट को बोल लीजिए, राइटर्स, तो उनके लिए एक जिसको कहते हैं ना मैदान एक खुल गया है। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतना वेरीड कंटेंट है कि आप एक तो किसी एक जॉनर में अपने आप को जिसको कहते हैं परफेक्ट कर सकते हैं, निपुण बना सकते हैं, या if you are like an all rounder, you can voice for anything and everything, and it just works. It's just great for या the audiences as well as for this industry. हाँ, एंड इंटरनेशनली मैं, हाँ बोलो। Sorry, just to add to Nupur's point, since you were asking of some data, so there was I just recollected there was a report by Fiki and EY Media and on the
FICCI EY Media and Entertainment Industry last. Uh, it was for around March 2021, which 2020. says basically, yeah, March 2021. The report was Yeah. from March Okay. 2021, which basically Okay. said that regional languages, will make up 60% of television consumption in 2025, from around 55% in 2020, which is the current rate. Okay, so from 55% to 60% by 2025, and around 50% of streaming video consumption from even the video consumption of regional content is going to expected to go up to 50% on the streaming platforms from 30% in 2019. And this is not just limited to kids animation, it is applicable to both television and streaming Across. across genres. So definitely, local languages and localization is taking up, and it is going to grow going Yeah, forward. in fact, I tell a lot of my clients that hamara just India alone is equivalent almost to the whole of Europe, because not only in terms of the size and the number of people, but also Yes. in terms of the languages. हम 6-7 लैंग्वेज में इधर डब करते हैं जो पूरे यूरोप में डब होता है 6-7 लैंग्वेज में Yeah. on a regular basis. And Yeah. now gradually, as you've been saying, Abhishek, पहले हिंदी में शुरू हुआ, फिर तमिल तेलुगु में शुरू हुआ, फिर इंग्लिश में शुरू हुआ, अभी लोकल कंटेंट इंग्लिश में डब हो रहा है फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. Yeah. And now to most channels are going into Marathi, Bengali, Kannada, Malayalam, and more languages. So that spread is only Yeah. growing and increasing, and you're already seeing the effects of that. Yeah, You're going basically, to when kill when me. you start, sorry, Sorry, I'm so sorry. sorry. I just wanted So to say one small thing, yeah, Abhishek. please, You're going please to do, kill please me do, for this, please do. Mona, but it's Bangla, not Bengali. Then दो It's okay. बंगालियों को ना फिरकी ले रही है, फिरकी फिरकी कहते हैं. हाँ हाँ, ठीक है, चलो. Sorry, बांग्ला. So Abhishek. Please basically, go ahead. so what I was saying is, content, when our local content starts traveling globally, that is when our content also gets recognition, plus starts getting dubbed in foreign languages like English, that you mentioned. Like, for giving just to give you an example, there are a couple of shows that we have done which already has had international exposure. The first one is Lamput, which is basically very soon going to launch in the US as well. Uh, Wow. and the second one is Ekansh, which is again traveling. Ekansh Ek Se Badkar Snake, which is the first Indian CGI superhero action show which we did for Cartoon Network. We just launched it this year. That is also traveling outside of India. So as our content starts traveling, beyond our boundaries, uh, of course there'll again be more language translations happening for our content for in foreign languages as well. In foreign languages and dubbed versions. Yeah, Definitely. yeah, 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 yeah. Brilliant. So, how have you seen this over the years? Can you give me a sense of numbers? Like, ये localization industry, हमारी जब से हम, let's not go 3 decades back. Maybe we'll start with 2 decades back. तो ये तब से आज तक कितना grow हुआ है? So again, localization का ऐसा है ना, let me tell you कि in terms of not just languages, even in terms of local content, if today's day, if until a few years ago, everybody will know this, that most of the content that was happening, that used to air on kids television channels in India, was all acquired content which used to come Acquired. from international, basically international shows, which people used to pick up, dub them into local languages, and put them on the channel. Today, the scenario has changed a lot, because out of the top 10 shows in the kids category, 7 of them are local shows created हाँ, 100% in India, right from voicing to execution to everything. And that is right. growing year on year. So local content over a period of over the period of years has grown. Number of languages on the channels have grown from 1 to 7, 8. There are multiple channels and OTT players who are doing 7 to 8 languages overall in India. So we have actually come a lot ahead in comparison to what used to happen. Even the number of channels, just if I tell you about the linear feed, amongst the kids channels, there were 1, 2, 3 channels until a while ago, just a decade or so ago. But today, Bach reports 29 kids channels. Okay,
every week. So there are 24, almost 20 of them are national channels, rest are regional channels. So, and all of them are focusing on local content and localization as well, because they know if in India, if you want to reach out to the interiors, to the uh, villages, small towns, NCCS, ABC, all those audience, you have to basically localize, and only then you'll reach them. In fact, for us, we do have added voices to shows which had no voice as well. So Ah, Tom and Jerry is a great got example. Okay, it. there are no dialogues in the show, but we did add to Yeah. it. We added that flavor, and as soon as we launched it, that show was at the top of the category Yes. when we did that. So Yes. that's the power of localization, basically. Yeah, Yeah, and that's to add to what Abhishek just mentioned, it's not just अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं localized language जो है वो सिर्फ tier 2 tier 3 cities में consume होती है मतलब साउथ में अगर आप चले जाइए या तो इवन आप tier 1 cities को भी अगर आप देखिए एंड दिस इज वेरी ट्रू स्पेशली फॉर किड्स चैनल्स दैट मतलब बच्चे जो हैं वो इंग्लिश की जगह हिंदी में या अपनी लोकल लैंग्वेज में वो एनिमेशन या उस शो को देखना ज्यादा पसंद करते हैं एंड इट्स मतलब जब मुझे ये तो खैर ये बात तो जब मेरी बेटी भी काफी छोटी थी तो उससे लेकर के उसके एंटायर फ्रेंड सर्कल तक सो देयर इज नॉट लाइक एन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट एन ऑफिशियल डिपस्टिक मगर बच्चों के बिहेवियर को देखकर ही या उनके पैटर्न को देखकर ही ये समझ में आ गया कि भाई इंग्लिश आप समझते हैं अच्छी तरह से आपकी प्राइमरी लैंग्वेज है लेकिन आप फिर भी उसको डब्ड देखना पसंद करते हैं एंड वहां से लेकर आज तक जहां लोकलाइजेशन इंडस्ट्री पहुंची है it has grown leaps and bounds and this is honestly it's going to grow even more tenfold if I might say that. so as it's growing, are you finding and see, both of you are coming from the client side now. Over the last many years, both of you have been on the client side, the broadcaster side, the content owner or the content acquirer side of things. So have you found infrastructure and capacity an issue as this growth has been happening? If I may, Yes, yes, please, absolutely. please. Infrastructure and capacity is a very, very major challenge. I had the good fortune of actually scouting various territories not so far back, I mean 2018 and 2019, when at that point of time we were looking at expanding the languages that we were localizing in, or across 6-7 cities, कुछ 250-300 studios जो भी visit हुए मगर it was actually shocking to see that people who have even made a lot of profits from this business have not really bothered to invest back into the business. जो की प्लेयर्स हैं एंड हेंस दे आर की प्लेयर्स बिकॉज अब जैसे आप हैं बहुत सारे हमारे और भी वेंडर्स हैं लोकलाइजेशन इंडस्ट्री के हु आर की वेंडर्स बिकॉज उनको मतलब उन्होंने एक विजन रखा उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया जो प्रॉफिट्स बनाए उसको दोबारा इन्वेस्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया दे हैव टीम्स दे हैव प्रॉपर स्टूडियोज एटसेट्रा बाकी के जो स्टूडियोज हैं रीजन्स में अगर आप देखिए तो वहाँ बहुत मेजर चैलेंज है एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है सेकंड आई थिंक टैलेंट का मतलब ये तो आई एम श्योर मोना आप and even Abhishek will agree with this that we are already seeing a dearth of good talent. मैं सिर्फ वॉइसिंग टैलेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं आपके डबिंग डायरेक्टर्स की बात कर रही हूँ योर साउंड इंजीनियर्स की बात कर रही हूँ मैं राइटर्स की बात कर रही हूँ दीज आर पीपल हु आई मीन राइटर इज अ फाउंडेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट अगर आपका की स्क्रिप्ट ही सही नहीं है तो आप स्टूडियो में भी दुगना टाइम इन्वेस्ट करेंगी आप पैसे ज्यादा खर्च हो जाएंगे आर्टिस्ट परेशान हो जाएगा उसको सिंक करते करते उसको डायलॉग का सही मतलब निकालते निकालते तो it's like a circle and this has to work in a specific harmony मगर जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है डबिंग इंडस्ट्री या लोकलाइजेशन इंडस्ट्री किसी की फर्स्ट चॉइस नहीं होती है कोई हीरो बनने आया भाई स्ट्रगल कर रहा है अच्छा चलो भाई पैसे तो कमाने हैं तो चलो ये कर लिया लिख लिया वॉइसिंग कर ली या डबिंग डायरेक्शन कर लिया विच इज एक्चुअली वेरी सैड क्योंकि दिस इज अ प्रॉपर स्ट्रीम ऑफ बिजनेस
और इसमें अगर आप फोकस करें, एंड अभिषेक विल आल्सो अग्री, बिकॉज दैट्स व्हाट यू नो द थ्री ऑफ अस हैव श्योरली डन, वी फोकस्ड ऑन दिस इंडस्ट्री एंड वी हैव एक्चुअली रीप द बेनिफिट्स फ्रॉम इट. आज हम जहां भी हैं वो इस इंडस्ट्री की बदौलत है. अभिषेक. But Abhishek, tell me So something. Do you found that the focus has changed? Sorry, you say what you want on this point, then I want to move on to another thing Sure, that Nupur touched upon. sure. Huh. So Yes. I was just I just wanted to break this point up. So in a couple of sections. One is that, see, when you talk about talent. So frankly, I feel that our industry is brimming with talent. Okay, talent की कमी नहीं है. But you need to find out that talent. You need to associate with people who know that talent, जो उनको ला सकते हैं, कर सकते हैं आपके लिए काम. Because even for us, we have been associating with very good talent. मतलब सिर्फ वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लेवल से लेकर, इवन वी हैव वर्क विद पीपल लाइक गुलजार साहब, who's written all our title songs. We have worked with Sukhwinder or your Kailash Kher. So basically, if we are going after the best talent available in the industry. Okay, this is the first part. Now comes the second part. जहां पे आप इंफ्रा की बात कर रहे हैं. सो इंफ्रा का हुआ क्या है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, इफ यू सी द नंबर ऑफ production houses that have come up in the voicing field have grown by a very rapid pace. ओके, बट जिस पेस से उन्होंने ग्रो किया है ना, उस पेस से उन्होंने अपना इंफ्रा डेवलप नहीं किया है. A lot of people have come in who have taken a couple of shows. वो एक दो शो जब तक चल रहा है, they did and they left with whatever they earned with that. Long term जो ग्रोथ स्टेटिस्टिक्स है, या लॉन्गर टर्म पे जो सोचे लोगों ने, वो बहुत कम है हमारे इंडस्ट्री में एज ऑफ नाउ. सो आई थिंक टैलेंट के एंड पे उतना इशू नहीं है. बट हाँ, डेफिनेटली in terms of infrastructure growth, and there are people who have invested, like Sound and Vision also being one of them. There are multiple studios who have invested a lot in this field. I think we need more and more people who would actually invest back that money in the infrastructure, looking at the future, which clearly, like all the indicators are showing that this is a growing industry. So, and this is where there is a lot of scope going forward. So I think that is where one should put more focus on. अभिषेक की बात पर एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि इस देश में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है. लेकिन होता ये है कि आप टैलेंट जो है वो इंडियन सिनेमा की तरफ माइग्रेट हो जाता है. तो आपने जैसे गुलजार साहब का नाम लिया, गुलजार साहब इज एसोसिएटेड विद हिंदी सिनेमा. और भी बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं हु आर एसोसिएटेड विद द सिनेमा साइड ऑफ थिंग्स. अगर हम लोकलाइजेशन को एज एन इंडस्ट्री बात कर रहे हैं तो इस इंडस्ट्री में उस टैलेंट को डेवलप करने की जरूरत है कि अगर कल अभिषेक आपको अपने किसी शो के लिए या डिज्नी को या नेटफ्लिक्स को किसी शो के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ राइटर चाहिए या कोई एक खास डबिंग डायरेक्टर चाहिए. जैसे हमें पता है कि मार्वल के लिए मोना इज द गो टू डबिंग डायरेक्टर, बिकॉज वो मोना ने एक तो खुद अपने अंदर वो डेवलप किया है. शी हैज दैट सेंस कि इस कंटेंट को किस तरह से डायरेक्ट करना चाहिए ताकि जो ओरिजिनल क्रिएटर का जो इंटेंट है, जो इंग्लिश में जो जिस हिसाब से उन्होंने उस कंटेंट को बनाया है, एग्जैक्टली उसी को उतार लिया जाए दूसरी भाषा में. सो द पॉइंट वाज कि इस इंडस्ट्री में रह करके डबिंग फ्रेटर्निटी के लोगों को उस टैलेंट को डेवलप करना चाहिए. यस, इंडियन सिनेमा का टैलेंट, इफ यू हैव डीप पॉकेट्स, अगर बिजनेस चाहता है कि हाँ चलो पीआर माइलेज के लिए किसी बड़े नाम के साथ एसोसिएट होना है, बिल्कुल होना चाहिए. लेकिन साथ साथ हमें आई थिंक इस बात से हमारा फोकस नहीं हटना चाहिए कि इस बिजनेस को और इस इंडस्ट्री को भी उतना पुश मिलना चाहिए, उतना डेवलप करना चाहिए. आई मीन दैट्स दोस आर माय टू बिट्स ऑन दिस बिट. दो तीन बातें आप लोगों ने दोनों ने बहुत इंटरेस्टिंग बोथ ऑफ यू हैव टच्ड अपॉन. फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ द फोकस दैट हैज अराइव्ड ऑन द लोकलाइजेशन इंडस्ट्री. सेकेंडली, ये जो आप टैलेंट की बात कर रहे हो कि टैलेंट बहुत सारा है, but how is it nobody is aspiring to be a part of the localization industry? Everybody is aspiring to be a part of the movie industry. So is it a lack of awareness, or do you think time and cost are barriers? क्योंकि हमारे काम में टाइम भी बहुत लिमिटेड मिलता है, टर्न अराउंड टाइम, और कॉस्ट भी बहुत लिमिटेड हुआ करता था. डू यू सी दैट फोकस चेंजिंग, अभिषेक? Okay, so see, first of all,
डबिंग इंडस्ट्री के बारे में है ना, आई थिंक अ लॉट ऑफ नॉर्मल पीपल हु कम टू गेट इनटू द मीडिया इंडस्ट्री, वो जो नॉलेज है इस इंडस्ट्री के बारे में कि देयर इज अ डबिंग इंडस्ट्री दैट एग्जिस्ट्स, वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं है लोगों को. ओके, Awareness. अवेयरनेस, करेक्ट, अवेयरनेस की कमी है. ऑल्सो एक रीजन और है कि देर आर नॉट टू मेनी इंस्टीट्यूशंस एज वेल इट हु आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन ट्रेनिंग दिस न्यू टैलेंट. ओके, Yeah. देर आर हार्डली लाइक 2 or 3 यू कैन नेम ऑन योर फिंगर्स जो अभी अभी लाइक कुछ सालों में लोगों ने शुरू किया है, और दे हैव पुट देयर फोकस एंड फेथ ऑन दैट. बट वो भी कमी है. तो जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा ना कि ऐसी भी एक इंडस्ट्री है जहां पे हम जाके अपना करियर बना सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो in this industry have either come through someone or have stumbled onto it. कोई ऐसा दिमाग बना के आई डोंट थिंक हैज कम इन के मैं डबिंग आर्टिस्ट बनने जा रहा हूँ. ओके, क्योंकि लोगों Exactly. को पता ही नहीं है कि ऐसा डबिंग आर्टिस्ट होता तो है. फिर भी बनने आते, कोई डबिंग डायरेक्टर नहीं बनना चाहता है. एंड यू नो करेक्ट, द रोल ऑफ द डबिंग डायरेक्टर इज हाईली अंडरमाइंड, आई फील, in this entire content localization space. And you know, we're coming back to the whole focus aspect. I find that all our lives we have been trapped in numbers. You know, localization has always been a part of marketing and distribution initiatives. So at the end of the day, you are a number. यू नो, कि हमको इतने आईबॉल्स तक पहुंचना है, तो हमको इतने लैंग्वेजेस करने पड़ेंगे, इतने शोज डब करने होंगे, इसके लिए इतना हमको इतना हमारा रेवेन्यू आएगा, तो इतना हमारा स्पेंड होना होगा. सो यू नो द होल थिंग, लाइक हाउ you go into the creation, the original creation of a subject, thinking that okay, you know, quality, time and quality, cost are the two most important parameters that go into the quality of something. Is that still, are we still a number, or have we moved away from that? Is there a better consciousness towards that now? If I may. yeah, Yeah. sure. Yeah. So I think, yes, the shift has started to happen. One of the things that has plagued our industry for the longest time has been undercutting. हर इंडस्ट्री में अगर आप देखिए तो आपको एवरेज, मीडियोकर एंड हाई लेवल क्वालिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी. चाहे आप चाइना चले जाइए या हिंदुस्तान में ही रहिए, आप प्रोडक्ट्स को देखिए या आप टैलेंट को देखिए, वो चीज़ें ज़रूर हैं. मगर हाँ, जहाँ व्हेन यू नो इट इज़ ड्रिवन बाय पैशन, वहाँ पर आपको वो डिस्टिंक्ट डिफरेंस ज़रूर नज़र आएगा. आई हैव हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ मीटिंग सम सच वेंडर्स इवन डाउन साउथ, जिनका ये मानना था कि अगर कंटेंट इंग्लिश में बन रहा है तो मेरा बच्चा उसको अपनी भाषा में क्यों नहीं देख सकता है. तो जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चलेंगे कि आप सिर्फ आईबॉल्स के लिए ये Sorry. सिर्फ आईबॉल्स के लिए ये नहीं कर रहे हैं, बट यू नो आप अपने मासेस को और अपनी ऑडियंसेस को एंटरटेन करने के लिए कर रहे हैं. दैट्स ग्रेट. सेकेंडली, the business side of things also, they have started to take notice that this is not just a by the way activity. You know, you are actually gaining as much profit, if not more, from localized content as opposed to your original content. अगर आप एक शो को हिंदुस्तान में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फर्ज कर लीजिए बाहर प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको कहीं और भेज नहीं रहे हैं, लोकलाइज नहीं कर रहे हैं, तो you are actually undermining your own profits. If you are circulating it globally, आप उसको हर उस देश की भाषा में localize कर रहे हैं जहाँ पर आपका presence है, you are actually multiplying your earnings that many fold. So that's one. And जहाँ तक talent का सवाल है, Mona, just touching upon the previous point that you made. See, filmmaking, you know, production, etc., is now, it is identified as an art. All right, Mumbai University has 4 colleges in Mumbai affiliated with them for film media, film production and new media production, and there are graduation certificates being awarded to students. I know, क्योंकि my daughter is a graduate in that. मगर वहाँ पर भी अगर आप देखिए तो डबिंग को या यू नो बाइलिंगुअल स्क्रिप्टिंग को या डबिंग डायरेक्शन को, मतलब वहाँ मतलब मान्यता देना तो दूर, आइडेंटिफाई भी नहीं किया हुआ है.
तो दिस हैज टू एक्चुअली स्टार्ट एट दैट लेवल वेयर जो न्यू क्रॉप आ रहा है इंडस्ट्री में, चाहे आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोल लीजिए या टेलीविजन इंडस्ट्री बोल लीजिए, ये हमें टैलेंट वहां से टैप करना चाहिए so that they get trained into this field. They could be on the creative side of things, or like you had identified that spark in Abhishek ki yes, he'll be great with management. They could also be on the business side of things. It is a complete industry by itself. It may not be as huge as the Indian film industry, but it definitely has a very substantial standing in this country, and it should only grow. And it is vendors like matlab dubbing producers like you guys, uh, दर्पण हैं, शुगर मीडियाज हैं, और भी बहुत सारे हमारे डबिंग प्रोड्यूसर्स हैं, मुना लीला जी एंड यू ऑल हैव बिन स्टॉलवर्ड्स इन दिस. सो आप जिस तरह से आप ट्रेनिंग स्कूल्स रन करते हैं, नॉट जस्ट फॉर वॉइस आर्टिस्ट, इट शुड हैपन फॉर अदर टैलेंट एज वेल, फॉर डबिंग डायरेक्टर्स, फॉर राइटर्स एटसेट्रा, सो दैट ये धीरे धीरे लोगों को पता चले कि भाई ये भी एक स्ट्रीम है, आपके क्रिएटिव जूसेस भी यहाँ सेशिएट होंगे, इट विल बी अ गुड मोड ऑफ अर्निंग फॉर यू, and as an artist you will receive that kind of satisfaction as well. Right. Also, just to add on to that, basically what happens, as initially previously there were very few players in the category. Okay, so हो सकता है कि उसमें कोई एक दो ऐसे हो जो उतना बॉदर नहीं करते थे कि क्या तरह का डबिंग हो रहा है या क्या तरह का टैलेंट यूज हो रहा है अपने शोज में. बट टुडे इफ यू सी नो, द कंपटीशन इज सो स्टिफ amongst all the players, be it any platform, be it linear, be it non-linear, everywhere, that everybody wants to do their best. And when competition increases, people want to do better than whatever anyone else is doing, and that is when uh, things start Quality changing. improves. Yeah, quality improves, and from you start moving from numbers to actually focusing on what you want to present to the audience that is going to come and watch your show. So I think that is But you're a saying that big. shift has most definitely happened now. Yes, that shift has definitely So, happened. along with that shift, are you seeing also now much better level of professionalization coming through in the industry? You How want well to are take we that? dealing with these volumes? The growing demand. How well are we dealing with that? So frankly, for from our side, basically we manage our volumes by distribution, by distributing it to as many people as possible. Of course, there are sets of processes within each network which are being followed in the selection criteria and how we go about it. But yeah, basic. So of course, there are limitations in the number of episodes you can churn out in a month. But then, as we keep moving from acquisitions to local productions, the entire scenario changes as well. Okay, so basically, in terms of when you talk about local productions, it's not just about going to the studio once and doing our part and just coming back for corrections. It's a completely different ball game together. You go once, you are first of all you're doing it completely in blind. You don't know what the character is, what the situation is, what how is it going to sound. And then once the animator actually starts working on it and creates some the flow, it goes back to the studio again, okay, to basically again do a reversion of the same thing. So for every the point I'm making is that for every kind of localization there is a completely different set of processes and requirements, I think. And since this market has opened up, I think you will see all of this coming along Yeah, to the studios, and yeah. basically you have to distribute to as many people नहीं, to basically. अभिषेक की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, एंड आपने ये भी जो कहा कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हो या लीनियर नेटवर्क, लीनियर चैनल्स हो, इस वजह से जो बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स है, तो पहले ये होता था कि अच्छा हाँ भाई चलो डब करा लो, एयर कर दो, ना किसी ने देखा ना किसी ने मॉनिटर किया, तो जो अच्छे वेंडर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट डब करके भेज दिया, और जो जिनको नहीं, मतलब कोई जानबूझ के तो खराब काम नहीं करता है, मगर जिनको इतना अवेयरनेस नहीं है कि भाई इसको हम इससे ऐसा करके हम इसको थोड़ा और बेटर कर सकते हैं, तो वो भी चला जाता था भाई नेटवर्क पे. अब तो क्या है, विथ सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग बिकमिंग सो Yeah. इंक्लूसिव, आपको इमीडिएटली व्यूअर फीडबैक मिल जाता है कि भाई आपका कंटेंट बहुत बढ़िया है या बिल्कुल बकवास है,
So that itself has become a sort of I'm going to call it a rude awakening for businesses, but it's been a good thing, क्योंकि businesses अब channels और platforms भी अब ध्यान देते हैं कि भाई localize जो कंटेंट वो करवा रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें क्या जा रहा है, आर यू फॉलोइंग your regular standards and practices, procedures, there are censorship edits, etc, बहुत सी चीजें. So it's like an army of ants. It's like an anthill. Everybody works together and everybody comes together. And this will only get better with time. So the more that the business side of things, the client side of things, they stress on quality, they monitor the quality, the better the vendors will start performing, the better the payouts will become. Vendors also, there has to be a certain amount of unity in the industry, which sometimes, at least maybe a decade ago, was not there as much. कि अच्छा चलिए वो 100 रुपए में आपको ये करके दे रहे हैं तो हम आपको 75 में कर देंगे. दिस इज व्हाट हैज एक्चुअली प्लेग्ड द इंडस्ट्री. तो अगर वो धीरे धीरे कम होता जाए, एवरीबडी demands a certain price for the quality output that they are expected to provide, उस हिसाब से तो बाहर से तो बढ़त होनी चाहिए, एक इंटरनली भी इस ग्रोथ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड ओनली देन विल बी प्रॉस्पर एज अ लोकलाइजेशन इंडस्ट्री इन दिस कंट्री. तो But एनीवे see, मैं इस हाँ सॉरी बोलो बोलो. sorry, no, I was just adding one line that to Nupur. Basically, like even for us at Cartoon Network and Pogo, every episode that goes on air has uh, gone through at least four people before it has actually gone air to check in terms of quality, continuity, modulation, everything, like all the Improvement. parameters. Yeah, yeah, improvements, enhancements. How more interesting can you make it? And is the message that you want to put in is going across? And it becomes very important for kids networks like Cartoon Network, Pogo, Yeah. even the Disney channels, because they are viewed as babysitter channels. So you have to be sure कि आप Yeah. वहां पर what are you putting on air, because parents actually बच्चों को बिठा देते हैं चैनल्स के आगे. उनको अपना जब काम करना होता है, चलो भाई 1-2 घंटे, दे आर लिटरली बेबी सिटर चैनल्स. तो इस वजह से फ्रॉम द क्लाइंट साइड ऑफ थिंग्स, अभिषेक के लिए, हम लोगों के लिए Responsibilities भी a lot. रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बच्चे क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स दे सॉर्ट ऑफ एक साथ पिरो करके ये माला बनती है. अकेले तो ये किसी के बस की बात नहीं है. तो खुशखबरी तो ये है कि चीजें इंप्रूव हो रही हैं धीरे धीरे. सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि सबके लिए बहुत काम है और भी बहुत काम होने वाला है. चाहे वो स्टूडियोज हो, चाहे डबिंग वेंडर्स हो, डबिंग डायरेक्टर्स हो, डबिंग टैलेंट वॉइस एक्टर्स हो, राइटर्स हो. नुपुर, मैं तुमको बता दूं कि हरीश भिमानी जी ने तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट दिया है. ही सेज ही इज वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू एंड योर वर्क. That's so wonderful coming from such a senior stalwart of our industry. So So much. quickly, we have to, unfortunately, we're out of time and I want to wrap up. But I want to have quick thoughts from you. I wanted to do a fun rapid fire session. तुम दोनों को grill करने का मेरा बड़ा मन था, लेकिन आज time नहीं है. तो मैं 2-3 सवाल just quickly पूछूंगी. If you can just give me some very quick answers. Sure. One is, the first thing is, what do you see as the need of the hour? For the localization boom, what is the need of the hour? Ladies first. Recognition. I would say recognition. I think there needs to be more focus on basically creating more talent, creating more awareness about the industry, and nurturing the talent basically. So Rapid training is fire a very big Training, yeah. रैपिड फायर Training का and- सेंटेंसेस में जवाब देना है. सॉरी. वो क्वेश्चन इतना लंबा था कि एक वर्ड में नहीं दे सकते थे. जवाब देना है because we're running out of time. अभी तक clock is ticking. Sure. 8:05 हो चुका है. Yeah, तो just जितनी जल्दी, मतलब these are just quick thoughts, initial Yeah, thoughts sure, and things sure. which are actually, quite frankly, definitely at the back of our mind, if not at the top of our mind right now. And probably they are at the top of our mind right now, especially the three of us being so deep into this. We are feeling this every day, every moment. That's how I started training, is that I was feeling it constantly. But I'm finding what's very sad for me is, especially with dubbing directors, they come, they join 2 years, 3 years, once they've learned it,
nobody really wants to stay a dubbing director all their lives. They either want to become a writer or a voice actor, or move on to doing move on to the client side, the business side of things. So I'm feeling that is one area where I don't know, are they not getting their due? Are they, what is it? How can we retain them better? How can we make this a more fulfilling journey for them? How can we make this a more aspirational journey for them? देखो, सबसे पहला ख्याल तो ये आता है दिमाग में कि जैसे फिल्म का डायरेक्टर होता है, वैसे लोकलाइजेशन प्रोजेक्ट का डायरेक्टर इज योर डबिंग डायरेक्टर. ही और शी इज द कैप्टन ऑफ द शिप. तो Hmm. मेरे ख्याल से इस ड्यू अगर नहीं मिला है, पैसों की बात तो हम नहीं करेंगे बिकॉज दैट डिफर्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. मगर आई थिंक जिस तरह से डायरेक्टर को ग्लोरीफाई किया जाता है, वीडियो प्रोडक्शन डायरेक्टर को, उस तरह की ग्लोरी ऑडियो प्रोडक्शन डायरेक्टर, डबिंग डायरेक्टर को नहीं मिली है. सो आई थिंक कलेक्टिवली हम लोगों को इस बात को ड्रिल करना चाहिए टैलेंट के दिमाग में कि योर वर्ड इज फाइनल ऑन द प्रोजेक्ट. यू आर लिटरली ड्राइविंग द शिप. सो द मिनट, बिकॉज देखिए, हम हर चीज हम अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं करते हैं. कुछ चीजें हम इसलिए भी करते हैं दैट वी इट हैज टू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्राइड. And I think that is what is lacking. So if that can be encouraged within the talent, who are being trained as dubbing directors or who are dubbing directors right now, I think we'll see lesser and lesser churn in that particular field. And I think giving credit where it's due is very important, so that Absolutely. people feel the ownership of what they're doing. Absolutely. Absolutely. Totally agree on that one. Yeah. Yeah, and So some, yeah, bolo. sorry, I was just adding to that. Okay, dubbing director and the sound engineer, sound engineer who basically spend a lot of time together throughout the day in the studio. Uh, Very important people for any project, because dubbing director is the सूत्रधार for the entire project. हर artist आता है, अलग अलग आता है, अपना अपना dubbing करके जाता है, unless you need a sequence where you need multiple artists working together. तो डबिंग डायरेक्टर ही है जो सारे चीज के ऊपर पूरा फोकस रखता है. जहां तक टैलेंट रिटेनमेंट की बात है ना, वो वो इट्स अ काइंड ऑफ अ रोल जो एक जगह पे बैठ के आपको सालों साल करना पड़ता है. इट्स इंटरेस्टिंग, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट मे गेट मोनोटोनियस. सो इफ ही इज दिस इज माय पर्सनल पर्सपेक्टिव कि if he wants to grow further, if he wants to get involved into other aspects of the entire dubbing industry, I think we should allow him, but also at the same time we should also basically uh, uh, make him understand that the role he is in is one of the most important and the key roles that happens in this industry. So it's if he or she wants to add on additional profiles, it's fine, but I would not recommend anyone to actually leave it and go anywhere, because it is a very very important and responsible role. And so far as broadcasters are concerned and undercutting is concerned, do you think cost cutting is a huge temptation for broadcasters? So frankly, from a broadcaster's perspective, the kind of shows we do, we don't see it as के एक episode में 500,000 2,000 बचाने हैं. We That is not the way we look at things. How it works is that we have a overall budget for the entire year, and within that budget we need to do everything that needs to be required to be done. And when you talk about spending, I don't think we have ever actually held back for spending on creativity, because that is what we are all about. Like, we are storytellers, right? So we want our story to be the best when we put it out there. So we frankly, from our perspective as a broadcaster, we have never focused on cutting down costs just to meet some budgets. I would rather stop the show and maybe push it later on if there is a constraint on the budget, which never happens, frankly, from a broadcaster's perspective. The cost cutting which is happening in the industry is actually driven by the industry, is what I feel, uh, in my experience that I have gained over the years, and I'm sure you'll understand how that happens. Oh, yes, absolutely. So quickly prioritize
Cost, quality, project management, and content security. Quality, quality, and quality. I mean, Nupur? thank you. Nupur, definitely quality. That has to be number one. Content security and project management are a close second. एंड कॉस्ट ऑफ कोर्स कम्स लेटर. आई थिंक यहाँ पर ये एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि इंडियन क्रिएटिव इंडस्ट्री, आप चाहे उसको फिल्म इंडस्ट्री पकड़ लीजिए, ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री पकड़ लीजिए, विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू, यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है दैट डिसाइडिंग जगहों पे या डिसाइडिंग पोजिशंस पे अक्सर उन लोगों को बैठा दिया जाता है जिनको इंडस्ट्री का कुछ भी पता नहीं. वो बेसिकली दे कम फ्रॉम Bane नंबर, of my life. yes, Bane of number my life. number crunching backgrounds. तो मेरे ख्याल से वहां पर लोगों को, ऐसे लोगों को बैठाना चाहिए जो कि इंडस्ट्री के बारे में या उन्होंने काम किया हो या वो कुछ जानते हो, ताकि उनको ये पता चले कि भाई अगर आप शूट कर रहे हैं तो अगर डीजल का दाम बढ़ गया है तो जनरेटर का भी दाम बढ़ेगा अकॉर्डिंगली, और ना कि आप ये फिर पूछें कि भाई हाँ डीजल बढ़ा हो तो बढ़ा हो, जनरेटर क्यों बढ़ रहा है. आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ प्रोडक्शन एंगल. एंड सिमिलरली अदरवाइज ऑल्सो कि भाई अगर आपका कंटेंट आधे घंटे का है वर्सेस 50 मिनट, तो उसमें व्हाई इज देयर हैज टू बी अ क्वालिटेटिव कॉस्ट डिफरेंस एक्सेट्रा. अक्सर लोगों को ये, एंड दिस आई हैव बीन फेसिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड फाइटिंग अगेंस्ट इट, बट इट जस्ट फील्स लाइक अ लोन वॉर. मगर ये है चैलेंज हमारे हमारे क्रिएटिव फील्ड्स में, बट होपिंग दैट विल चेंज. एक सैड बात बताऊं, हमारे सैड फैक्ट बताऊं. हम जो ये 30 साल की बात कर रहे हैं ना, तुम और मैं, कि हम 30 साल से इस इंडस्ट्री में हैं. द सैड थिंग इज 30 साल में हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा एवरीथिंग कितना बढ़ चुका है. देखो हमारे अर्निंग्स कितने बढ़ चुके हैं, सब कुछ कितना बढ़ चुका है. द कॉस्ट ऑफ डबिंग रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम in the last 30 years. I think It it has has actually not come It's down. just, yeah, it has come down. it It has had come it had down. come down thanks to OTT. Now it is coming back to at least 1990, 1993, 1994 levels. Turner came to us in 1996 when they first launched, so that was the first professionalization. But the feature films were being dubbed from 1993. तब की रेट और आज की रेट सेम है 30 साल बाद. So that is a very sad thing, and I would invite any closing remarks from both of you as we wrap up. That, I mean, of course there's so much to look forward to, but the reality hasn't changed too much. The bottom line has not changed too much. Yeah. Abhishek, you I want to think, go? yeah, I think we are moving towards the right direction after a long time, and I think things are going to only improve from here going forward. Uh, uh, we have learned from what we always learn from the past, and basically try and improve in the future. And this industry, I think, has a lot of potential. It's here to stay. It's here to grow, and I think going forward we'll definitely see things improving year on year. So things went bad slowly and gradually. Things will improve also slowly and gradually. But we are on the right track, is what I feel. And just before I leave it for the closure, I would just like to thank you, Sugar Media's India Voice Fest, for having me here. Thank you so much, Mona, and thank you, Nupur, for bearing with me as well. You're welcome. Over to you. For my, thank you, Abhishek. For my closing remarks, Mona, I'll say कि हम सबको जो भी इस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं, we should make it our personal motto to evangelize this industry. इसके बारे में हम जितनी ज़्यादा बात करें, जितने ज़्यादा फ्रेश टैलेंट को इंडस्ट्री से जोड़ने की कोशिश करें, सीरियसली आई मीन जब तक हम वो नहीं करेंगे, और as business vendors, as dubbing houses, as dubbing production houses, also have that kind of unity that we stand our ground. अगर कहीं क्लाइंट ये भी कह रहा है कि नहीं चलो हम ये इसको थोड़ा क्रंच कर देंगे और बजट को, क्वालिटी तो हमको मिल ही जाएगी, ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं, तो होल्ड ऑफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. जस्टिफाइड कॉस्ट्स के लिए आई थिंक दैट इज अ डिस्कशन दैट शुड बी हैड. जस्ट बिकॉज क्लाइंट ने कह दिया कि नहीं आप इसको कम कर दीजिए, आपको कम नहीं कर देना चाहिए.
तो इस तरह की चीजें हैं। अब अपने नेक्स्ट जनरेशन में इस चीजें इन बातों का जिक्र करना चाहिए, दैट दिस इज व्हाट द इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट, दिस इज द options that you have, not just whether you talk about the creative arts or whether you talk about the corporate sector. It's all there. It's just about us now really sort of pushing for it and promoting it. And ये सब चीजें करके ही धीरे धीरे we'll be sort of, we, like Abhishek said, we are heading in the right direction. Now it needs jet fuel and a propeller to kind of shoot ahead. And So, again, yeah, I mean, thank you to India Voice Fest. Thank you to Sugar Media's Darpan, Mona. You, I mean, like I said, stalwarts of the industry. Just keep at it. Keep doing what you guys do. It's absolutely marvelous. I feel a lot of pride, in belonging to this industry. And having worked in this industry, it's my good fortune that I have had the association with all you lovely people. And thank you, Abhishek. Thank you for your time. It has been heartwarming to see you here. And Mona, thanks again. Thank you, thank Darpan. you, guys. You are the flag bearers for our cause now. You have nowhere to go. You have signed up for what I'm about to say. You have to make the powers that be understand that production cost gone up 100 times in 30 years, and dubbing cost वही का वही है. ये आपकी जिम्मेदारी है. Please take it seriously और please हमारे लिए कुछ कीजिए. हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन आप भी उसमें थोड़ा सा हमारी सहायता Of करें. course. दर्पण हमें भगाने आ गया है, तो हम जल्दी नहीं भाग नहीं, चले हैं. मैं थैंक यू भगाने नहीं सो आया, मच. मैं थैंक यू गाइस. भगाने नहीं आया. मैं ये कहने आया हूँ कि मैं बहुत ध्यान से पूरा सेशन सुन रहा था, एंड ट्रस्ट मी, द इंटेलेक्चुअल quotient ऑफ द एंटायर इवेंट went 5 notches up. क्योंकि I think the last 1 hour or so, there was not one moment where I could just look away from the screen or not listen to you guys. नूपुर, शुरू में आपने कहा था कि लोकलाइजेशन, इंडिया में लोकलाइजेशन को वही इज्जत मिलनी चाहिए जो बाहर मिलती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया वॉइस फेस्ट जैसा मंच या इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव इसमें एक योगदान देता है. और जब ऐसे इनिशिएटिव में अगर मोना या साउंड एंड विजन इंडिया जुड़ते हैं, जो इंडिया के सबसे बड़े कंटेंट लोकलाइजेशन कंपनीज में से एक हैं, तो हमारी ओवरऑल लोकलाइजेशन इंडस्ट्री की जो गरिमा है वो बढ़ती है. जब नेटफ्लिक्स की सीनियर रिप्रेजेंटेटिव आकर इस फोरम में बात करती हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी गरिमा बढ़ती है. वार्नर मीडिया के अगर सीनियर रैप आकर यहाँ पर वक्त देते हैं और अपने ख्याल रखते हैं, तो हमारी इंडस्ट्री की गरिमा बढ़ती है. तो मुझे लगता है हमको 4 साल लगे हैं यहाँ तक आने में, जब कंटेंट ओनर्स, प्लेटफॉर्म्स और कंटेंट एक्वायरर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आकर इस मंच में शामिल हो रहे हैं. तो मेरा तो 10, 12 या 15 साल का मेरा एजेंडा था कि 15 साल तक करेंगे, तब तक की हवा बदलनी शुरू हो जाएगी. मुझे लगता है उसके पहले ही शुरू हो गई है. तो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले सालों में भी आप और आप ही के कॉलीग्स और जो अलग दूसरे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कंपनीज के, कहीं ना कहीं वो शामिल हो. क्योंकि इंडस्ट्री सिर्फ वॉइस ओवर आर्टिस्ट से नहीं बनती है. टॉप से लेके बॉटम तक हर कड़ी जब तक नहीं जुड़ेगी, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी. तो इसके लिए एक बहुत बहुत थैंक यू. एक सवाल है छोटा सा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा. रमा वैद्यनाथन है, जो बहुत ही बड़ी प्रख्यात वॉइस कोच है, और उनकी बहुत बड़ी किताब है डिस्कवर योर वॉइस. शी इज अ वेरी पॉपुलर वॉइस कोच. शी इज वॉचिंग अस राइट नाउ एंड शी रोट टू मी अ क्वेश्चन व्हिच आई थॉट वाज वेरी पर्टिनेंट फॉर दिस पैनल. शी सेड, कई फिल्मों में, कई जो बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, वहां पर आजकल एक सिस्टम आ गया है क्वालिटी कंट्रोल टीम का. तो तो उन्होंने कहा कि ये, क्योंकि वो खुद एक वॉइस कोच है, तो कहती है कि मेरे कान बहुत एक्टिव रहते हैं, तो क्या डबिंग इंडस्ट्री में भी ऐसा कभी टाइम आएगा. अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये सवाल पूछा, और उसके 2 मिनट बाद में ही मोना स्पोक अबाउट कि 30 साल में क्या नहीं बदला है. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो दोनों बातें कनेक्टेड हैं. तो अभिषेक, आई लास्ट यू कि क्या ऐसा वक्त आएगा कि दैट यू हैव अ क्वालिटी कंट्रोल टीम जो हु इज डेडिकेटेडली फोकस्ड ओनली ऑन ensuring कि ये. So from a broadcaster's end, Dapan, I would proudly tell you that we already have a quality control team in our organization. As I said, that every
show or every piece of content, it's not just about the shows, it's even the smaller elementals, promos से लेकर AV से लेकर जो भी बनता है, everything goes through at least 3 to 4 people before it actually goes on air. आपका हर Okay. स्टेज पे बेसिकली, since we do a lot of productions as well, sorry थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आपका, No, but not I'll at all. explain it in a better way. So बेसिकली जब क्योंकि हम प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, इसीलिए क्वालिटी के ऊपर हमारा और ज्यादा फोकस हो जाता है, बिकॉज जब पहली बार हम वॉइसेस सुनते हैं, वो आर्टिस्ट के पास या डबिंग स्टूडियो के पास कोई बैकग्राउंड नहीं होता कि ये क्या एग्जैक्टली बनने वाला है, एक्सेप्ट फॉर द स्क्रिप्ट, बिकॉज कैरेक्टर्स रेडी नहीं होते हैं आपके। ऐसा नहीं है कि आप कुछ देख रहे हो और उसके ऊपर डब कर रहे हो, आपको पेस भी सोचना है, आपको सिचुएशन भी सोचना है, आपको सब कुछ सोचना है। तो और ऊपर से सिंस वी आर केटरिंग टू किड्स, तो वहां पे अगेन एज नूपुर आल्सो वाज मेंशनिंग अ व्हाइल अगो कि हमारी रिस्पांसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्या क्या चीजें हम देखते हैं एक्चुअली जब हम हमारे पास आती हैं फाइल्स? वॉइस मॉड्यूलेशन डेफिनेटली, परफॉर्मेंस इन द सेंस आप का अप्स एंड डाउन्स वॉइसेस में कितना है, पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब अगर कैरेक्टर इज सपोज टू शाउट फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, आप ऐसे नहीं बोल सकते अरे भाई कहाँ हो, आपको वो पर्सपेक्टिव चाहिए, वो सारा चीजें है। आपकी क्लैरिटी वॉइस की कितनी है, कितना समझ में आ रहा है, कैरेक्टर के साथ जो कैरेक्टर हम कर रहे हैं उसको सुटेबल है कि नहीं, आपका पेस सही है कि नहीं डायलॉग को। तो ऐसे कई पैरामीटर्स हैं जो बेसिकली हर लेवल पे चेक किए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट रन में अच्छा लगता है, बट एनिमेशन बन के फर्स्ट एनिमेशन कट बनने के बाद लगता है यार ये आर्टिस्ट या फिर ये नॉट नॉट आर्टिस्ट, बेसिकली ये वॉइस इसके साथ नहीं जा रहा है, सो मे बी वी Correct. शुड चेंज दिस। तो ऐसे ही करके हर लेवल पे होता है, एंड वी डेफिनेटली हैव ऑलरेडी हैव अ क्वालिटी कंट्रोल team Okay. within our organization who's dedicated just to focus on quality, nothing else. वो बजट्स भी नहीं देखते हैं, वो वेंडर्स को डायरेक्टली, इनफैक्ट जब वॉइस टेस्ट वगैरह आते हैं, दे डोंट इवन नो हु इज द वेंडर हु सेंट द वॉइसेस, बिकॉज टू दैट टीम इट जस्ट गोज एज ABCD, ये चार आए हैं, you need Okay. to select Okay. who's the selected. That's how it Okay. happens. Okay. Fair enough. So I think that's a fair answer, Rama ma'am. I hope you got your answer. Mona, you wanted to say something. Quality control has become a huge part of the job now, as they're saying, as this industry is getting professionalized. Correct. We as a localization company take it very seriously. We don't send anything out without complete quality control, both creative and technical. And Correct. all of these companies that Abhishek and Noopurr have worked for today or in the past all have teams now that do strict quality control, both for creative as well as for technical as well as for censorship. The standards and Correct. practices team Of that course. Hmm. every broadcaster has, and the Of legal course. teams and the technical and the creative teams. There are 4 teams that actually will look at everything from a quality control perspective. So that has creeped in a long time ago now. Yeah. And to add to that, the creative producers who are responsible for the quality control of a particular piece of content, they are very language specific as well. So Yes. businesses and clients actually have quality control people per language. So the teams are structured like that. तो अगर आप हिंदी में डब कर रहे हैं या तमिल तेलुगु में Yes. आप डब कर रहे हैं, तो उन उन भाषाओं के लोग हैं जो उन पोजीशंस पर हैं और वो क्वालिटी चेक करते हैं. And I'm talking about creative quality here because Hmm. that's key to any project. Correct. Fair. So that's a great answer, Rama ma'am. I hope you are now satisfied. Great, guys. Thank you so much, Abhishek, Nupur, and Mona. We had such an amazing time listening to this conversation, and I think for a long time to come, in the times to come, thousands and thousands of people will watch this session, and there's so much to learn. And I can't thank you enough for making time for India Voice Fest and making it a small part of your life. Thank you again. Thank you. Bye bye. Thank Thank you you. Thank you so so much, much, Darpan, for Darpan, having us. for Thank you. giving me such fun sessions this time.